हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, हम आज पढ़ेंगे साइंस का चैप्टर उसका नाम है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो पहले हम सबसे पहले जानते हैं एटम क्या है। एन इंडियन फिलोसोफर महर्षि कनद postulated that if we go on dividing matter, that is Padarth, we shall get smaller and smaller particles. Unlimited stage will come when we shall come across the smallest particle beyond which further division will not be possible. He named these particles Parmanu. Another Indian philosopher, Mukunda Katyayana, abrogated that this tetrahedron and said that these particles normally exist in a combined form which uses various forms of matter. So दो साइंटिस्ट थे, एक महर्षि कनद एंड कात्यायन। उन्होंने देखा कि पॉसिबिलिटेड किया कि अपन डिवाइड करते जाएंगे स्मॉल पार्टिकल्स को, तो वो डिवाइड मैटर पदार्थ कहलाता है। ओके, उसके बाद आता है एंटोइन लेवेजर laid the foundation of chemical science by establishing two important law of chemical combination. मेरे पास फ्रेंड्स कुछ नोट्स हैं, हम उस नोट्स को पढ़ेंगे, प्रिंट आउट है। आप चाहो तो आप अपनी नोट्स की तरह आप कॉपी में लिख सकते हैं। So, law of conservation of mass. Law of conservation of mass was given by Antoine Lavoisier. And law of conservation mass, Antoine Lavoisier एक नाम के साइंटिस्ट ने के द्वारा दिया गया था इन ईयर 1774। 1774 ईयर में उन्हें लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास निकाला। It states that matter is neither created nor destroyed in a chemical reaction. उन्हें matter neither create हो सकता है nor destroy in chemical reaction. In other words, the total mass, that is the sum of the mass of reacting mixture and the products formed remains constant. Example, CaCO3 plus CaO plus CO2, 100 ग्राम, 56 ग्राम या 44 ग्राम। सेकेंड आता है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। जोसेफ फ्राउस्ट, फ्रेंच केमिस्ट, state that the proportion of elements by weight in a given compound will always remain exactly the same. In simple terms, we can say that irrespective of its source, origin, or its quantity, the percent composition of elements by weight in a given compound will always remain the same. जोसेफ फ्राउस्ट एक नाम के साइंटिस्ट ने, फ्रेंच साइंटिस्ट ने, chemist stated the proportion by elements by weight in a given compound. Given elements weighing करा था given compound, वो सेम ही रहता है इन सिंपल टर्म्स। दूसरे शब्दों में हम बता सकते हैं कि irrespective of its source, origin, or its quantity, percent composition of elements by weight in a given compound will always same, वो सेम ही रहेगा। अब आता है डेल्टन एटॉमिक थियरी। ये सबसे मेन है फ्रेंड्स, ये आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो आप उससे थरो कीजिए। डेल्टन एटॉमिक थियरी was a scientific theory on the nature of matter put forward by the English physicist and chemist John Dalton in the year 1808. It stated that all matter was made up of small
invisible particles known as atoms. So friends, डेल्टन एटॉमिक थियरी क्या है? वो एक साइंटिफिक थियरी है नेचर ऑफ मैटर put forward by the English physicists. एक इंग्लिश फिजिक्स एंड केमिस्ट जॉन डॉल्टन इन ईयर 1880 वो स्टार्ट हुआ दैट ऑल मैटर्स वॉज मेड अप ऑफ स्मॉल लगभग स्मॉल पार्टिकल्स है एंड इनविजिबल पार्टिकल्स नोन एज एटम्स. उससे एटम्स कहा जाता है स्मॉल एंड इनविजिबल पार्टिकल्स को. ठीक है. all substance according to Dalton's atomic theory are made up of atoms which are invisible and indestructible building units, while an element's atoms were all the same and mass. Various elements passed by atoms of varying size and mass. Okay. The postulate and limitants of delta are listed below. अब postulates मतलब क्या वो गलत हुआ उनका postulates. Okay. All matter is made up of tiny invisible particles called atoms. All atoms of a specific element are identical in mass, size, and other properties. However, atoms of different elements exhibit different properties and vary in mass and size. Atoms can neither be created nor destroyed. Furthermore, atoms cannot be divided into small particles. Atoms neither create and nor extend. आगे atoms cannot be divided into smaller particles में divide नहीं होगा. Atoms of different elements can combine with each other in fixed whole number ratios in order to form compounds. Atoms can be rearranged, combined or separated in chemical reaction. वो chemical reaction में rearrange हो सकता है and combine भी हो सकता है. फ्रेंड्स, हम लिमिटेशंस ऑफ डेल्टन्स एटॉमिक थियरी कल पढ़ेंगे. ठीक है. अगर आपको एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स वाला वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें. बाय. एंड बेल आइकन को प्रेस करने का मत भूलना. बाय.